guys, think. Okay, so we're coming on to our next episode of the series chemistry competition. एक बारी आपके रिमाइंडर के लिए दो दो हमारी सीरीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चली. वन इज आओ प्रैक्टिस करें, जिस कल ही एक नया वीडियो अपलोड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और सेकंड जो हमारी चली है दैट इज केमिस्ट्री फॉर कंपटीशन, एंड वी हैव गॉन ऑन टू आवर सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट किया. जिन्होंने देखी है चेक आउट द वीडियो प्लेलिस्ट. और ये सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसका सेकंड चैप्टर का फोर्थ पार्ट वी आर गोइंग टू डू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. हम सारी वीडियो में देखे और उसमें हम लोगों ने लॉज विद क्वेश्चन डिस्कस करे. अगेन आई विल रिपीट, नहीं देखे गो एंड चेक आउट द प्रीवियस प्लीज, बिकॉज ये सारे इन कंटिन्यूएशन विद वन अनदर. ओके, so what are we going to do today? आज हम लोग 2.4 Gay-Lussac's law and Avogadro's law जो है that we are going to discuss, and I'm going to right idea of the Dalton's atomic also. Okay, but before that guys, please download the app. और उसपे inquiries आ रही थी नाइन्थ के वीडियोस they have already uploaded. Some of them are still left, so they upload हो जाएंगे. You can buy the course by August mid. इसका syllabus complete. Okay. Secondly, there is a course which is going to start on the app, that is Master Organic Chemistry for NEET 2022. This course is starting on the 1st of May. ये 1 month का course है. You can go and check out this course also. देना है अभी 2022 में course है Master Organic Chemistry, and it will be really beneficial for you. And another course which is really going on good, the ₹1 course जो जिसमें mock test है. So 5 already uploaded, 6 will be uploaded today. और इसमें 10 आपके mock test है. This is again for your all those who are going to sit for NEET, all those who will JEE, Master Cadre, KVS. मतलब they are generalized mock test I have put, but focus ज़्यादा NEET के. तो इसको भी आप दे सकते हो. ₹1 का कोर्स है. That is going to be really really helpful. And guys, an important announcement, 11th और 12th की जो live classes है, they are going to begin soon. फर्स्ट में ये भी स्टार्ट हो रही है आपकी 11th और 12th की sorry live classes. And best part is that you can pay the fee monthly. आप मंथली पे कर सकते हो. गो एंड सी इन द ऐप क्या आपकी मंथली करती है, एंड enroll for the class. ये लाइव क्लासेस हैं. द क्लासेस फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, 4 days in a week क्लासेस रहती है. तो इसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, apart from that you also get a question bank, online test, so everything that is included आपकी preparation. You don't have to go for offline classes for 11th and 12th for chemistry. Everything will be sorted on the app. Okay, so let's go on to our chemistry for competition. Point 4 पे चलते हैं guys. And we are looking at the next set of laws, Gay-Lussac's law and the Avogadro's law. ये दो laws हम करने वाले हैं. Now, you know, Gay-Lussac, he performed a number of experiments. बहुत सारी reactions के ऊपर उन्होंने experiments करी. Gases were involved. Specifically, this law is given for gases. Okay, specifically this law is given for gases. And you know what he found? He found something very, very interesting. Found कि एक regularity exist करती है between the volumes of the gaseous reactants and the products. Okay, so he put forward a generalization saying that when gases react together, जब भी gases react करेंगी एक chemical reaction के अंदर, तो हमेशा react करती है in a simple ratio by volume to one another.
Okay, and also to the volumes of the product. We are illustrating the law by taking the example of formation of water over here. अगर हमने 2 volumes of water लिया है, right? So we are taking 2 volumes of water over here, and we are taking 1 volume of oxygen, is giving us 2 volumes of water. So if you're looking at the ratio हमारे पास क्या आ गई? 2:1 is, this is the ratio which we have over here. So you can see that it is a whole number ratio. Also experimentally it has been found, अगर हम 1 volume of hydrogen है और उसको हम react करते हैं with 1 volume of chlorine, so experimentally it is found that we get 2 volumes of it. So what is the ratio, guys? The ratio over here for the formation of HCl, that is going to be 1:1:2. तो ये सारी सिंपल होल नंबर रेशोज है. अगर आप फर्स्ट वाली रिएक्शन भी देख रहे हो या आप सेकेंड वाली रिएक्शन भी देख रहे हो, तो दिस इज इन अरेंजमेंट विद द मोलर रेशोज. ओके, मोलर रेशोज कैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे 1 मोल इधर प्रेजेंट है, 1 मोल इधर प्रेजेंट है और 2 मोल्स दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हियर. Similarly, we can take another example, that is an example of formation of ammonia. अगर हम लोग ले रहे हैं N2 plus CH2 giving us 2 moles of ammonia. So all of them, remember all of them, they have to be in the gaseous. सारे के सारे gaseous state में होते हैं. तो क्या यहाँ पे according to Gay-Lussac's law whole number ratio होना चाहिए reactants और products का, guys? This is 1 is, it's a very simple, well, you can say law which we have, saying, or a generalization which we have. It is also known as the Gay-Lussac's law of combining volumes, which says that when gases react together or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume to one another and the volume of the product. Okay, so provided all the gases they are at the same temperature and pressure, ये conditions जो होंगी they should be same for all gases. It's a very simple. Gay-Lussac's law is a very simple law as far as your examination competitions are concerned. Generally do not get any question from this, but still should have a knowledge. अब ये एवोगाड्रोस लॉ जो हम करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से हम डेफिनेटली फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में एक क्वेश्चन हम लोग जरूर. So when we looking at the Avogadro's law क्या बोलता है? Says that अगर हम लोग conditions of temperature and pressure same रखेंगे, तो equal volumes of all gases contain equal number of molecules. If you want to put it down, you want to note it down, you can note down the law. Says under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of. Okay, so mathematically what we can say? Mathematically say that volume that is directly proportional to n. यहाँ पे n क्या है? N that is number of molecules. Okay, like for example, अगर हम लोगों ने equal volumes of 3 gases ली, let's say we have taken over here
कंटेनर्स ले लिए, एक में हमने ले लिया हाइड्रोजन, दूसरे में हमने ले लिया क्लोरीन और तीसरे में हमने ले लिया ऑक्सीजन. Okay, so we've taken equal volumes. We've taken, let's say, 1 liter of hydrogen, 1 liter of chlorine, and we've taken 1 liter of oxygen. Irrespective of the gas, please remember, irrespective of the gas, चाहे इनके sizes सारे के different होंगे और nature भी different होगी, but अगर हम लोग इसको 1 liter एक कंटेनर के अंदर एनक्लोज करके रखेंगे, सारे फ्लास्क के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. इट इज ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी दिस कि सारे मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट साइज एंड मास. Gay-Lussac and Avogadro's law that was combined together. Let's say how कि अगर suppose हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, we are taking, again I'm taking over here formation of water 2H2 plus O2 to give us 2H2. ठीक है, तो ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है और ये भी गैशियस, तीनों गैशियस है. तो अकॉर्डिंग टू द Gay-Lussac's लॉ ये कितने हो गए वॉल्यूम, हाँ ये हमने किया था, और ये कितना हो गया 1 वॉल्यूम, और ये कितना हो गया वॉल्यूम. So this is in accordance with the Gay-Lussac's law. अगर हम लोग Avogadro's law लेते हैं तो Avogadro's पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, will have 2n molecules, isn't it? इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, this will have n molecules, और इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, this will also have 2n molecules, right? So 2 molecules is to 1 molecule is to 2 molecule, and that is the same ratio with respect to volume. 2 volume is to 1 volume is to 2 volume. So the ratio of all of this is going to be 2 is to 1 is to 2, right? Similarly, we can also talk of hydrogen chloride gas, H2 plus L2 give us HCl. So according to Avogadro, according to the Gay-Lussac law, ये क्या हो गया? Ratio is 1 volume is to 1 volume is to 2 volume. And according to Avogadro's क्या होएगा? N molecules is to N molecules is to 2n molecules. तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन वाला सेक्शन रहेगा, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, you have to be present in the next class. That is the question we are going to surround around V is directly proportional to N. Okay. Now over here there was another thing कि whenever we are talking of the Gay-Lussac's law, the Avogadro's law, there was another concept which was given, was the Dalton's atomic theory. So basically Dalton was the first scientist to give a theoretical justification to all the laws which we have given. Okay, so John Dalton, he provided a simple theory of matter, और इस theory of matter को हम क्या बुलाते हैं, as Dalton's atomic, right? So let's look at the postulates of Dalton's atomic theory. Elements are made up of tiny particles which are known as atoms. Atoms क्या होते हैं, indivisible. जितने भी atoms हैं, they are going to be indivisible. उनको हम लोग further cut नहीं कर सकते. Atoms का मतलब ही होता है uncuttable. That is what Dalton said. Okay. Then secondly, he says that each atom is characterized by the mass of its I'm so sorry. So characterized by the mass of its atoms. मतलब कि हर एक atom का अपना एक mass होगा. Same elements will have same masses. Right? Sodium के कितने भी atoms हो जाए, अगर आप एक कोई भी sample of sodium लेते हो, that is going to have millions and millions of atoms of sodium. Every sodium atom will have the same mass which is 23. या अगर हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं,
every atom of hydrogen is going to have mass which is equal to 2 units. होता है कि 1 होता है? 1 होता है, राइट. हीलियम का 4, और जब हम लोग हाइड्रोजन का करते हैं, then protium does not have any neutron, only has 1 proton. ठीक है, और 1 यूनिट 1 ग्राम भी इसको ले सकते हैं. फिर अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो सारे ऑक्सीजन के एटम्स जो है उसका मास दैट इज गोइंग टू बी 60. So every atom has its own mass. Atoms जो सेम एलिमेंट्स के होंगे masses होंगे, बट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट masses होते हैं. सो यू कैन ओवर हियर आल्सो सोडियम का मास 23 है, ऑक्सीजन का मास 6. हर एक बंदे का भी तो वेट डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर एक बंदे का बॉडी मास डिफरेंट होता है. तो इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे भी हर एक एटम का जो मास है दैट इज गोइंग. अब जब भी द थर्ड पोस्टुलेट इज दैट केमिकल कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स make different substances occur when atoms join together in small whole number ratio. So this is in accordance with the law जो कि हमने previous video में किया है, law of constant proportion. Right? So every जब भी chemical combination का element का different substance का, तो हमेशा it is going to be whole number ratio. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो तो व्हाट इज द रेशियो? 3:8 बाय मास. अगर हम वाटर लेते हैं व्हाट इज द रेशियो? 1:8 बाय मास. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी होल नंबर. देन लास्टली chemical reactions only rearrange the way that atoms are combined. कोई भी chemical reaction हो तो सिर्फ रीअरेंज करेगी एटम्स, एटम को चेंज नहीं करती है. Okay, it is only going to rearrange. So it means that whenever we are talking of the last postulate, simple language में वो क्या बोल रहा है? Atom can neither be created nor destroyed during any physical or chemical change. So जब भी chemical reactions की combination होगी, सिर्फ separation atoms की है, rearrangement atoms की हो सकती है, but is not going to change the atom as a whole, right? So ये हमारा आ गया Dalton's atomic theory. So what all have we learned today, guys? We have learned the Gay-Lussac's law. We have learned the Avogadro's law, and you have also seen what? The postulates of the Dalton's atomic. अब इसको हमने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, which is going to come in your next video. So be ready. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? We are going to do एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एंड आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है? और उसके अलावा are going to our question practice with the theory of the two video, right? So be ready for the next one. Till that time इसको देख लो. पता चल गया आपको, जब तक 100 views नहीं क्रॉस करेंगे, I am not going to put my second video. So please share it with your. My next video will only come अगर ये this will hit 100 views. Okay? So please share it with your friends. Large numbers so that 100 videos हमारे एक ही दिन में हो जाए and I am able to put the next video tomorrow only. Okay? Okay, guys. So be ready for the surprises. The questions are going to come in the next video. I shall see you soon. You can take care of yourself and study hard.